गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरा साइंस एंड टेक का अ, अगला सेशन है जिसमें मैं चौथे नंबर क्वेश्चंस को ले रहा हूँ। जो है व्हाट डू मीन बाय क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक्सप्लेन्स इंपॉर्टेंस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अथवा में एक क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय एग्रोफॉरेस्ट्री डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोफॉरेस्ट्री एंड मैनेजमेंट। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है What do you mean by crop diversification? Explain its importance in crop production and productivity. Intro. Crop diversification refers to the practice of growing more than one type of crop in a given agricultural area during a year instead of relying solely on a single crop. It involves changing the crop pattern from low value to high value crops, introducing different crop varieties, integrating food crops with cash crops, or combining short duration crops with long duration crops. This strategy helps to ensure food security, improve farm income, reduce risk from crop failure, and maintain soil health. In simple words, crop diversification means moving away from monocropping cultivation of one crop repeatedly towards a mixed or various cropping pattern. It can be achieved by intercropping, growing two or more crops in the same field, crop rotation, or combining crops with horticulture, livestock, or agroforestry system. Its importance. First, risk management and crop failure prevention. Dependence on a single crop makes farmer vulnerable to market fluctuations, pest attacks, and climatic changes. Crop diversification spreads the risk. If one crop fails due to drought, flood, or disease, other crops may still provide a harvest. This ensures stability in production and income. Second, improve soil fertility and health. Different crops have different nutrients requirements and root structure. By rotating or intercropping legumes such as pulses with cereals, farmers can naturally replenish soil nitrogen level. This reduces dependency on chemical fertilizers and improves long-term soil productivity. Third, better use of natural resources diversification ensures optimal use of land, water, sunlight, and nutrients. For example, deep-rooted crops like sugarcane can be grown alongside shallow-rooted crops like vegetables to utilize soil resources efficiently without exhausting them. Fourth, control of pests, disease, and weeds. Continuous cultivation of single crop creates favorable conditions for pests and disease to thrive. Crop diversification disrupts pest life cycles, reduces weed growth, and minimizes the chances of widespread crop loss, thereby reducing the need for chemical pesticides. Fifth, economic stability and higher income. By growing high-value crops such as fruits, vegetables, spices, or medicinal plants, along with staple food crops, farmers can increase their market opportunities. Diversified crops can fetch better prices and provide a continuous income stream throughout the year. Sixth, efficient labor utilization. Different crops have different sowing and harvesting times. Diversification ensures that labor is utilized throughout the year instead of only during the peak season. This helps in reducing underemployment in rural areas. 7. Climate change adaptation. Changing climate pattern causes unpredictable rainfall, temperature fluctuations, and extreme weather events. Diversifying crops with different tolerance levels to heat, drought, or waterlogging helps farmers adapt and maintain productivity under such conditions. 8. Promotion of sustainable agriculture. Crop diversification reduces excessive dependence on chemical inputs, conserves biodiversity, and promotes eco-friendly farming practices. Integrating agroforestry, fisheries, and livestock farming into crop systems further strengthen sustainability. 9. Food and nutritional security. Relying on only one crop may limit the variety of nutrients available to people. Diversification ensures the production of cereals, pulses, fruits, vegetables, and wild seeds. These together provide a balanced diet and improve community nutrition. 10. Market opportunities and export potential. Diversification allows farmers to produce crops
that have high export value, such as spices, herbs, and organic products. This not only boosts farm income but also strengthens the agricultural economy. The conclusion: crop diversification is not just a technique but a necessity for modern agriculture. It ensures stability in crop production, enhances soil fertility, increases resilience against climate change, and improves the farmer's income. By reducing dependence on a single crop, it minimizes risk, promotes biodiversity, and strengthens food and nutritional security. In the long run, adopting diversified cropping system is essential for sustainable agriculture, growth, environmental conservation, and rural prosperity. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें। परिचय: फसल विविधीकरण का अर्थ है किसी क्षेत्र में केवल एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय वर्ष भर में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाना। इसमें कम मूल्य वाली फसलों से उच्च मूल्य वाली फसलों के बदलाव, नई किस्मों का समावेश, खाद्य फसलों के साथ नकदी फसलों को जोड़ना या अल्पावधि फसलों के साथ दीर्घावधि फसलें उगाना शामिल है। यह पद्धति खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों की आय बढ़ाने, फसल विफलता के जोखिम को कम करने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती है। सरल शब्दों में फसल विविधीकरण का अर्थ है एक ही फसल बार बार उगाने की जगह मिश्रित या विविध फसल पैटर्न अपनाना। यह अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग, फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन या फसलों को बागवानी, पशुपालन और वानिकी के साथ जोड़कर किया जा सकता है। फसल उत्पादन और उत्पादकता के लिए फसल विविधीकरण के महत्व: पहला, जोखिम प्रबंधन और फसल विफलता की रोकथाम। एक ही फसल पर निर्भरता किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव, कीट रोग और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाती है। विविधीकरण से जोखिम बढ़ जाता है। यदि किसी कारण से एक फसल नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल से उत्पादन और आय बनी रहती है। दूसरा, मिट्टी की उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार। अलग अलग फसलों की पोषक तत्वों की जरूरतें और जल संरचना भिन्न भिन्न होती है। दालों जैसे दलहनी फसलों को अनाज के साथ उगाने से मिट्टी से प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होती है और मिट्टी की दीर्घकालिक उत्पादकता बनी रहती है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग। विविधीकरण से भूमि, पानी, सूर्य की रोशनी और पोषक तत्वों का सही उपयोग होता है। उदाहरण के लिए गहरी जड़ वाली फसलें जैसे गन्ना और उथली जड़ वाली फसलें जैसे सब्जियां साथ उगाकर मिट्टी के संसाधनों का संतुलित दोहन किया जा सकता है। फोर्थ, कीट रोग और खरपतवार खरपतवार नियंत्रण। लगातार एक ही फसल उगाने से कीट और रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। विविधीकरण से कीटों के जीवन चक्र में व्यवधान आता है, खरपतवार की वृद्धि कम होती है और रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता घटती है। 5, आर्थिक स्थिरता और अधिक आय। मुख्य खाद्य फसलों के साथ साथ फल, सब्जियां, मसाले या औषधीय पौधे जैसे उच्च मूल्य वाली फसलें उगाकर किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं और साल भर बाजार में अलग अलग उत्पाद बेच सकते हैं। छठा, श्रम का कुशल उपयोग। अलग अलग फसलों की बुआई और कटाई का समय अलग होता है, जिससे साल भर श्रम का सही उपयोग होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम होती है। सातवां, जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन। जलवायु में बदलाव के कारण असमान वर्षा, तापमान में उतार चढ़ाव और चरम मौसम घटनाएं होती हैं। अलग अलग सहनशीलता वाली फसलें उगाने से किसान इन परिस्थितियों में भी उत्पादन बनाए रख सकते हैं। आठवां, सतत कृषि को बढ़ावा। फसल विविधीकरण से रासायनिक इनपुट पर निर्भरता घटती है, जैव विविधता संरक्षित होती है और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा मिलता है। नौवां, खाद्य और पोषण सुरक्षा। केवल एक ही फसल पर निर्भरता पोषण की विविधता को सीमित कर देती है। विविधीकरण से अनाज, दालें, फल, सब्जियां और तिलहन सभी का उत्पादन होता है, जिससे संतुलित आहार मिलता है और पोषण स्तर बढ़ता है। 10वां, बाजार और निर्यात अवसर। मसाले, जड़ी बूटियां और जैविक उत्पाद जैसे निर्यात योग्य फसलें उगाकर किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर दाम प्राप्त कर सकते हैं और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकते हैं। इसका निष्कर्ष इस पर लिखा गया है: फसल विविधीकरण केवल एक तकनीक नहीं बल्कि आधुनिक कृषि की आवश्यकता है। यह फसल उत्पादन में स्थिरता, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और किसानों की आय में सुधार सुनिश्चित करता है। एक ही फसल पर निर्भरता घटाकर यह जोखिम कम करता है, जैव विविधता को बढ़ाता है
और खाद्य व पोषण सुरक्षा को मजबूत करता है। दीर्घकालिक रूप में से अ, विविध फसल प्रणाली अपनाना सतत कृषि विकास, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण समृद्धि के लिए आवश्यक है। अथवा में एक और प्रश्न था एग्रोफोरेस्ट्री का। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रोफोरेस्ट्री? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री एंड its management. Agroforestry is a sustainable land use system that combines the cultivation of trees and shrubs with crops and or livestock on the same piece of land. It is designed to optimize the benefits from biological interactions between trees, crops, and animals. Unlike monocropping, agroforestry integrates different components of farming to improve productivity, biodiversity, and ecological balance. The main idea behind agroforestry is to create a symbiotic relationship where trees provide shade, wind protection, soil enrichment, and microclimate regulations, while crops and animals benefit from improved growing conditions. This system has been practiced traditionally in many parts of the world, but is now gaining renewed attention as a modern approach to sustainable agriculture. Importance of agroforestry. First, enhances soil fertility. Trees in agroforestry system contribute organic matter to the soil through leaf litter and root decomposition. Leguminous trees also fix atmospheric nitrogen, improving nutrients availability for crops. Second, prevent soil erosion. Tree roots bind the soil, reducing erosion caused by the wind and water. This is particularly important in hilly and drought-prone regions. Third, improves water conservation. Trees canopies reduce the impact of raindrops on the soil, allowing better infiltration of water. Root system also help in maintaining groundwater level. Fourth, increases biodiversity. Agroforestry supports a variety of plant and animal species, creating habitats and promoting ecological stability. Fifth, economic benefits. Farmers can earn from multiple sources: timber, fruits, nuts, fuel foods, medicinal plants, and crops, providing a diversified income and reducing financial risks. Sixth, climate change migration. Trees in agroforestry system absorb carbon dioxide, reducing greenhouse gas levels. They also help in moderating farm temperatures and protecting against extreme weather. 7. Support livestock. Tree provides fodder, shade, and shelter for animals, improving livestock health and productivity. 8. Sustainable land use. Agroforestry maximizes land productivity without degrading natural resources, making it a long-term solution for food security. Management of agroforestry. For agroforestry to be successful, proper planning and management are essential. The following principles guides management. First, selection suitable trees and crop species. Choose trees species that are compatible with crop and livestock. Avoid trees with aggressive root system that may compete excessively for water and nutrients. Example: neem, acacia, leucaena, and mango trees often work well with cereals and pulses. Design spacing. Plant trees in rows or scattered patterns depending on the intended purpose: windspake, alley, cropping, or silvopasture. Maintain, maintain enough spacing to allow sufficient sunlight. Soil and water management. Adopt contoured planting in sloped area to prevent erosion. Use mulching and cover crops to conserve moisture and improve soil health. Fourth, pruning and thinning. Regularly prune tree branches to control shade level and avoid excessive competition. Remove overcrowded trees to ensure proper growth. 5. Pest and disease control. Monitor crops and trees regularly for signs of pests or diseases. Use integrated pest management (IPM) techniques to minimize chemical use. 6. Harvesting and utilization. Plan harvesting schedules for both crops and tree products so they do not interfere with each other. Utilize tree by-product, leaves, twigs for composting or animal fodder. 7. Community participation and training. Agroforestry projects
work best when local communities are involved in planning and decision making. Training farmers in species selections, planting techniques, and maintenance is essential. The conclusion: agroforestry is more than just planting tree alongside crops. It is a holistic approach to land management that balances productivity with environment care. By integrating trees, crops, and livestock, it creates a resilient farming system that improves soil fertility, conserves water, increases biodiversity, and provides multiple income streams. Proper management ensures that all components coexist harmoniously, making agroforestry a practical solution for sustainable agriculture in the face of climate change and growing food demands. इसका हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है: कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं? कृषि वानिकी का महत्व एवं प्रबंधन का वर्णन करें। एग्रोफिस्ट्री या कृषि वानिकी एक सतत भूमि उपयोग प्रणाली है जिसमें एक ही भूमि पर पेड़ों और झाड़ियों की खेती को फसलों या पशुपालन के साथ जोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य पेड़, फसल और पशुओं के बीच जैविक अंतक्रियाओं से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। मोनोकल्चर केवल एक फसल की खेती के विपरीत एग्रोफॉरेस्ट्री विभिन्न घटकों को मिलाकर उत्पादकता, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ाती है। इस पद्धति में पेड़, छाया, हवा से सुरक्षा, मिट्टी की उर्वरता और सूक्ष्म जलवायु प्रदान करते हैं, जबकि फसलें और पशु इन बेहतर परिस्थितियों से लाभ उठाते हैं। इसका महत्व: मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। पेड़ों की पत्तियों और जड़ों के सड़ने से मिट्टी में जैविक पदार्थ जुड़ता है। दलहनी पेड़ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बांधकर फसलों के लिए पोषण उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, मिट्टी का कटाव रोकना। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ती है, जिससे हवा और पानी से होने वाले कटाव कम होते हैं। तीसरा, जल संरक्षण में मदद। पेड़ों की छाया वर्षा की बूंदों के सीधे प्रभाव को कम करती है, अब पानी व मिट्टी में समाने का अवसर देती है। चौथा, जैव विविधता बढ़ाता है। एग्रोफॉरेस्ट्री से पौधों और जानवरों की कई प्रजातियों को आश्रय मिलता है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहता है। आर्थिक लाभ: किसान लकड़ी, फल, मेवा, ईंधन, औषधीय पौधे और फसल में बहुआयामी आय कमा सकते हैं, जिससे आर्थिक जोखिम कम होता है। छठा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैसों का स्तर घटता है और तापमान संतुलित रहता है। सातवां, पशुपालन को सहयोग। पेड़ पशुओं को चारा, छाया और आश्रय देते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और उत्पादन बेहतर होता है। आठवां, सतत भूमि उपयोग। यह प्रणाली भूमि की उत्पादकता को बढ़ाती है, बिना प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इसका प्रबंधन: पहला, उपयुक्त पेड़ और फसल प्रजातियों का चयन। ऐसे पेड़ चुनें जो फसलों और पशुपालन के साथ अनुकूल हो। जड़ प्रणाली बहुत आक्रामक न हो, ताकि पानी और पोषक तत्व के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धा न हो। उदाहरण: नीम, बबूल, लैक्टुकेना, आम आदि। दूसरा, डिजाइन और दूरी का अध्ययन। पेड़ों को पंक्तियों या बिखरे रूप में लगाएं, उद्देश्य के अनुसार, जैसे हवा रोकने, गली कृषि या सिल्वो पशुपालन। पर्याप्त दूरी रखें ताकि फसलों को पर्याप्त धूप मिल सके। मिट्टी और जल प्रबंधन: ढलान वाले क्षेत्रों में समोच्च कंटूर पर रोपण करें ताकि कटाव रोका जा सके। मल्चिंग और आवरण फसल, कवर क्रॉप का प्रयोग कर नमी बनाए रखें। चौथा, छटाई और पतलापन, थिनिंग। नियमित रूप से शाखाओं की छटाई करें ताकि छाया नियंत्रित रहे। जरूरत से ज्यादा घने पेड़ हटाएं। पांचवा, कीट और रोग पर नियंत्रण। फसलों और पेड़ों की नियमित जांच करें। रसायनों का कम प्रयोग करते हुए समेकित कीट प्रबंधन अपनाएं। छठा, कटाई और उपयोग। फसल और पेड़ उत्पादों की कटाई का समय इस तरह तय करें कि एक दूसरे में बाधा न हो। पेड़ की पत्तियों और टहनियों का प्रयोग खाद या चारे में करें। सातवां, समुदाय की भागीदारी और प्रशिक्षण। स्थानीय समुदाय की भागीदारी से प्रोजेक्ट की सफलता बढ़ती है। किसानों को प्रजाति चयन, रोपण तकनीक और रखरखाव का प्रशिक्षण दें। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया है: एग्रोफॉरेस्ट्री या कृषि वानिकी केवल पेड़ों को फसलों के साथ लगाने की पद्धति नहीं है, बल्कि यह भूमि प्रबंधन का एक समग्र दृष्टिकोण है जो उत्पादन,
और पर्यावरणीय संरक्षण दोनों को संतुलित करता है। इसमें पेड़, फसल और पशुपालन का संयोजन मिट्टी की उर्वरता, जल संरक्षण, जैव विविधता और आय के स्रोत बढ़ाता है। सही प्रबंधन से यह प्रणाली दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ कृषि का समाधान प्रदान करता है, खासकर जलवायु परिवर्तन और बढ़ती खाद्य मांग के समय में। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट जरूर दें, और अगर कुछ क्वेरीज है तो मेरे मोबाइल नंबर में मैसेज करें। आगे भी ऐसा वीडियोज आते रहेगा। धन्यवाद।